नमस्कार, आई एम संजय चतुर्वेदी। सोसाइटी मित्र के दूसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। सोसाइटी मित्र एक ऐसी प्लेटफॉर्म है जहां आपको एक हम कहते हैं लीगल फ्रेंड इन लॉ। सोसाइटी मित्र में हम लोगों ने बहुत सारी लीगल लैंडमार्क जजमेंट्स, ब्लॉग और बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपके लिए रखी हैं जिसमें सोसाइटीज़ के कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह हम आसानी से सुलझा सकें। इस चैट बॉक्स में आप अपने सुझाव, अपने प्रश्न अवश्य डालिए और अगले एपिसोड में जब भी समय होगा तो उसको हम उस नए एक जजमेंट्स के साथ में प्रस्तुत करेंगे। आज का एक विषय जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय ये है कि महाराष्ट्र में रीडेवलपमेंट में जब सोसाइटी जाती हैं तो एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो है होता है, डेवलपर्स को चुनती है 79A के प्रोसेस के साथ में या नहीं के साथ में एक डेवलपमेंट एग्रीमेंट होता है। किसी कारणवश अब बिल्डर का कंप्लीट नहीं कर पाता, कॉन्फ्लिक्ट होता है। मैं आपको बताऊं, डेवलपमेंट एग्रीमेंट जो है वो यूजुअली एक लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। लाइसेंस का मतलब है कि आप एज अ सोसाइटी डेवलपर को आमंत्रित कर रहे हैं कि आप हमारी प्रॉपर्टी में आइए, फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड आप उस डेवलप कीजिए और उस पीरियड के बाद में आपको कोई हक नहीं बनता कि फिर आप हमारी प्रॉपर्टी में आप रिमेन करें, एंड वी कैन ऑलवेज टर्मिनेट यू एज फार एज द डेवलपमेंट एग्रीमेंट इज़ कंसर्न। मैं आपको 3 जजमेंट आज के इस एपिसोड में विमर्श करूंगा, उनको बताऊंगा, उनको पढ़ूंगा। लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, इसमें से एक सुप्रीम कोर्ट का था और जो जजमेंट्स वेदई आका जैसे अपने बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट था, और एक हाल फिलहाल में रेरा की एपेलेट ट्रिब्यूनल ने एक जजमेंट निकाला। इस वक्त पोजीशन क्या है, समस्या क्या है? समस्या ये है कि सपोज़ आपके सोसाइटी ने किसी डेवलपर को डेवलपमेंट एग्रीमेंट दिया। उस डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंतर्गत बिल्डर ने उसकी जो सेल कंपोनेंट है वो उसने ओपन मार्केट में बेची, और जब वो बेचता है तो जैसे ही डेवलपमेंट एग्रीमेंट आप उसके साथ करते हैं तो रेरा में वो रजिस्टर करता है, क्योंकि बिना रेरा के रजिस्ट्रेशन के वो कोई भी यूनिट बेच नहीं पाएगा, तो उसको एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट चाहिए रेरा से। नाउ आज के एपिसोड का प्रश्न ये है कि यदि बिल्डर या डेवलपर जिसके पास डेवलपमेंट एग्रीमेंट है आपका, जिसने रेरा में रजिस्टर किया हुआ है, क्या आप जब टर्मिनेट करते हैं तो क्या आप उसके शूज़ में पैर डालते हैं? मतलब क्या आप उसकी जिम्मेदारियां लेते हैं? क्या एसेट्स और लायबिलिटीज़ जो वो बिल्डर छोड़ के गया है क्या वो आपके ऊपर लागू है? क्या जो बायर्स को उसने बेचा है उसके लिए आप जिम्मेदार हैं? Simpliciter, the question is this, that whether the society becomes the promoter in RERA. Now this is a very important question which was asked, and it was been spoken throughout the development arenas where whether the society is responsible or no. Sometimes society do not give the consent for as become as a promoter, and then whether the RERA can impose a promotership on the society, and the society is liable for the people, those who have purchased sale component of the from the developer to whom the society has terminated. I am not going into that subject right now. We will take the टर्मिनेशन ऑफ डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैसे होता है, कहाँ होता है, क्या उसकी रिक्विजिट्स हैं, कैसे उसको आर्बिट्रेशन जाता है, या कैसे अपन आगे बढ़ते हैं, हम कैसे उसको टर्मिनेट कर सकते हैं, उसका एक अलग से विमर्श करेंगे। फिलहाल प्रश्न ये है कि क्या सोसाइटी की जिम्मेदारी या लायबिलिटी बनती है ऐसे प्रमोटर? ना, मैं आपको 3 जजमेंट आज बताता हूँ। पहला जजमेंट ये है कि
जो कि पहले से शुरुआत से चले आ रहा है, काफ़ी पहले पुराना जजमेंट है वैदेही आकाश का, बहुत लैंडमार्क जजमेंट है। उसमें क्या हुआ था कि सोसाइटी ने एक बिल्डर एक्स को डेवलपमेंट एग्रीमेंट दिया, बिल्डर एक्स कंप्लीट नहीं कर पाया, सोसाइटी ने उसको टर्मिनेट कर दिया। बिल्डर, क्योंकि डेवलपमेंट एग्रीमेंट में आर्बिट्रेशन क्लॉज है, इसके लिए दोनों के बीच में आर्बिट्रेशन हुआ, दोनों में से एक कोई हार गया और सामने वाले ने जो है बॉम्बे हाई कोर्ट में अपील कर दी, आर्बिट्रेशन अवार्ड आया और अपील कर दी। अपील में वैदेही आकाश का जो लैंडमार्क जजमेंट है, उसमें जो बिल्डर ने जिनको बेचा था, जो उसके सेल कंपोनेंट थी, एक रीएप कंपोनेंट होता है जो सोसाइटी को दिया जाता है, एक सेल कंपोनेंट है जो बाहर वालों को बेचता है। नाउ वो जो जिनको बाहर वालों को जो बेचा था, बायर अलॉटीज जिनको बोलते हैं, उन्होंने इंटरवीनिंग डाला कि सर क्योंकि ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ द डेवलपमेंट एग्रीमेंट, because it is a agent principal and vicarious liability, now we are having interest already in the society rehab sale component. हाई कोर्ट ने कहा कि भैया ऐसा है कि द ओनर इज द सोसाइटी, एंड इफ सपोज यू आर हैविंग एनी contractual obligations, it has to be satisfied by the developer. आप जाके डेवलपर को आप सू करिए, लेकिन इस वक्त जो है सोसाइटी मालिक है और वो प्रमोटर है, उसके पास में पूरा हक है और आपको वो किसी भी तरह से, क्योंकि प्रिविटी आपका और सोसाइटी का नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, इसके लिए सोसाइटी बाध्य नहीं है। ये एक वैदेही आकाश का जजमेंट था, सालों से चला आ रहा है। सोसाइटीज़ में डेवलपमेंट में कोई अच्छी तरह से उसको यूज़ करता था, कोई जो है अपने कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट थे तो वैसे यूज़ होते थे। आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, मैं सिर्फ आपको आज की यथा स्थिति बता रहा हूँ कि क्या हुआ। उसके बाद एक और ऑर्डर आया सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें यथास्थिति यही थी, सोसाइटीज़ के जो मेंबर्स थे, उन्होंने जो कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग थी, सेल बिल्डिंग थी, सेल कंपोनेंट था, उसमें जाके कब्जा कर लिया। अब बायर बोल रहा है कि भैया मैंने तो ये रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया हुआ है और जो फ्लैट ऑलरेडी बन चुका है, कुछ थोड़ा सा काम बाकी है या ओसी आनी बाकी है, उसके लिए सोसाइटी जिनको ऑलरेडी कुछ 500-600 स्क्वायर फुट मिलना था, वो अब 900, 1000, 1200 स्क्वायर फुट में बैठे हुए मेरे फ्लैट में। और रीडेवलपमेंट के अंतर्गत सोसाइटी साइटिंग दैट द वैदेही आकाश, सो नाउ वी आर द ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, यू गो एंड टेक वट एवर कोर्स यू वांट टू टेक इन द कोर्ट। गोरेगांव पर्ल करके एक ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया था कि गोरेगांव पर्ल में बेसिकली जैसे एकदम सेम स्थिति थी जैसी वैदेही आकाश में थे, लेकिन गोरेगांव पर्ल के कुछ में आपको अंश सुनाता हूँ पढ़ के, जिसमें उसको उन्होंने बिल्कुल फेर दिया। उन्होंने बोला कि जो एनसीआरडीसी ने जो ऑर्डर दिया हुआ है उसको मान्य किया जाएगा और सोसाइटी बाध्य है जो बायर्स हैं उनको पैसा देने के लिए या रिफ़ंड लेने के लिए 9% इंटरेस्ट के साथ में सोसाइटी को पैसा वापस देना पड़ेगा और सोसाइटी बिकम्स द प्रमोटर। And because the society is stepping in the shoes of the promoter, then the society needs to be, and the vicarious liability was established. मैं कुछ अंश पढ़ के सुनाता हूँ आपको गोरेगांव पर्ल के, जिसमें माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बड़े क्लियर शब्दों में सोसाइटी को आदेश दिया। मैंने जो आपको स्थिति बताई थी वैसी स्थिति थी। कुछ लोग कंज्यूमर से एनसीआरडीसी में गए और वहाँ से फिर सुप्रीम कोर्ट तक गए। द ऑर्डर ऑफ द गोरेगांव पर्ल जो एनसीआरडीसी ने दिया था उसको अपहेल्ड किया। तो एनसीआरडीसी का ऑर्डर क्या था, ऑपरेटिव पार्ट में आपको पढ़ाता हूँ। एज द सोसाइटी हैज़ टेकन पोजेशन ऑफ द फ्लैट्स अलॉटेड टू द कंप्लेनेंट्स एंड हैज़ अलॉटेड इट टू इट्स मेंबर्स, the society is liable to return entire money deposited by the complainants. So far as the dispute between the society and the developer is concerned, it is pending before the arbitrator,
which will be decided on its merit. Right of the complainant is not affected by the arbitration proceedings, as the Arbitration and Conciliation Act 1996 does not exclude jurisdiction of consumer forum as held by Supreme Court in MR MGF Land Limited versus Aftab Singh, and in Bangalore Development Authority versus Syndicate Bank, and in Fortune Infrastructure versus Trivon Development, and Kolkata West International City Private Limited versus Devasis Rudra. Now these four judgments were cited and held that a home buyer cannot be made to wait for possession of the flat for indefinite period of time. दो ऐसे लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें एक में वैदेही आकाश मैंने आपको बताया, एक गोरेगांव पर्ल में, और उसको बाद में उन्होंने ऑर्डर भी दिया कि इन द रिजल्ट द कंप्लेनेंट आर पार्टली अलाउड. गोरेगांव पर्ल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी is directed to refund entire amount deposited by the complainants with interest at the rate of 9% per annum from the date of respective deposit till the date of payment within a period of 2 months from the date of this judgment. Now after that the Supreme Court has also endorsed it. Now the clear position is this, that the society, if they terminate the developer, the liability of the buyer, flat buyers, now onus is on them to adhere to the contractual obligation made by the developer. Now very recent judgment of Maharashtra Real Estate Appellate Tribunal, because this judgment is very important, I tell you. You know why? This is a 37-page judgment, given by the Honorable Tribunal, and this was in the matter of New Sangeeta CHS Limited versus Kaushal M. Haria. This was a very clear-cut judgment made by the Honorable Court. Now what was the issue? The issue was the same. The society wanted to do Vaidehi Akash. They said that the onus is not on us. We are not the promoter under section 2 subsection ZK of the RERA Act, and we are not duty bound to adhere to the contractual obligations of the elsewhere developer, which we have already terminated. And the developer was also part of this particular appeal. Honorable RERA said that no, you are the promoter, very much you are promoter, and the society went into the appeal. And what the appellate tribunal said, I am just reading few paragraph for you, that, and it will be absolutely then clear, and then I will tell you that why at the time of registration of the projects, the RERA and the other RERAs are asking you to become a co-promoter, and they are asking a very specific form number B, that is a affidavit that you are a co-promoter. I am coming on that. Let us read that judgment, landmark judgment, because why it is so very important that the RERA tribunal has given such opinion is very important, because it will now be very clear that the society becomes the promoter in the event of termination of the development agreement. Now let's see what the tribunal said. And the question which the tribunal was answering was whether the society is a promoter under section 2 subsection ZK of RERA Act. Now in paragraph 22 it says that it is to be noted that there are 5 major players in real estate development industry, namely promoter, landowner, allotee, real estate agent, and competent authority, that is RERA. In the instant case, admittedly, society is landowner because the conveyance is yours, and before you go into the redevelopment, you have to have the conveyance in your name. We will come on MOFA and 5A, deemed conveyance, everything we are going to speak in some other episode. But today, let us stick to the subject. And further, the Honorable Tribunal said, therefore, the seminal issue of emanates for our consideration is whether society falls in the definition of
term promoter. This issue goes to the root of the matter. It decides the fate of rights of flat purchasers against the society and also obligation of the society towards home buyer who have purchased flats in sale component. Very clear language. Section 2ZK defines the term promoter. Then the definition was given. The definition is quite exhaustive. It covers every person who is associated with the construction of the building. The section has got 7 clauses covering the different categories of promoter. Out of them, only clauses 2, 3, B, 4 and cover plots. Whereas the clause 1, 3A, 4, 5 and 6 covers the both apartment and buildings. It is clear from the expression caused to be constructed. Now this is where the tribunal have emphasized that it is caused to be constructed, and under that the Honorable Tribunal further says that it is seen from the definition of promoter that landowner is covered by the definition of promoter. The word causes to construct in the definition of promoter is capable of covering the landowner also in respect of construction of apartment and buildings. Now further, the Honorable Tribunal have cited some cases, Vadva Group Housing Private Limited versus Vijay Chokshi, and promoter was very exhaustively defined under that. Now, after citing the Vadva's judgment, the Honorable Tribunal said, thus definition of the promoter under section 2ZK of RERA is wide enough to include every person who is associated with the construction of the building, such as builder, colonizer, contractor, developer, estate developer, or by any other name, or even the one who claims to be acting as the holder of a power of attorney from the owner of the land. So one of the principal objective of RERA is to bring transparency in real estate sector and to protect the interest of the consumer in real estate projects. Now further, let us now, further the judgment said that the RERA does not demarcate or restrict liabilities of different promoters in different areas. The liability is joint for all purposes under the Act, rules and regulations. Now see some of the very detailed explanation in the this landmark judgment, and under under the reason, the emphasis was, and further the tribunal was saying that there is one more reason as to why we have come to the conclusion that the society is a promoter. It is not in dispute that the arbitrator has accorded permission to the society to complete the project. Pursuant thereto, society applied to the authority for registration of the project. The society has decided to complete the project by itself, meaning thereby the society itself is acting as a developer. Now here the catch is, many society thinks that after we terminate the developer, the project is ours, and the sale component of the promoter, which he has already sold, now comes to us. Now we are ready, open in the market and we sell it. Sir, one thing is sure, that one flat which is already registered, having a mutation entry in the revenue, that is revenue record, you cannot sell it again unless it is terminated by either mutual consent or by the decree of the court. Secondly, the many societies are thinking that the sale component can be sold. Now please understand, in Maharashtra there is a circular which has come that either you have to show the RERA registration certificate valid, that is valid RERA registration certificate, or OC, either of two. So if you are not having OC, you cannot sell it in the open market. You need to have a RERA registration certificate in your name. So you become a promoter. The moment you become a promoter, here the lines which was very clear that pursuant to that, the society applied to the authority for registration of the project,
That means the societies now have become the promoter for the self-redevelopment. Clause 5 of Section 2, subsection ZK of RERA Act 2016 includes a person who acts himself as a builder, developer, becomes the promoter. The cumulative effect of above discussion and relevant provisions of RERA Act 2016, that is Section 2 subsection ZK, Section 16(1), Section 1, 17 and 18 subsection 2 is that society being landowner falls in the definition of terms promoter. What is the repercussion? The repercussion is that the Honorable Tribunal have very specifically give the operative part. Just I am just giving reading 1-2 line more for your perusal, that the Honorable Tribunal have said that the society is a promoter, and they have just endorsed the view of the Goregaon Pearl. The appeal is partly allowed. Impugn order so and so stands set aside to the extent of direction to the, that was some penalty was given, but the order was upheld, and it was that the Honorable Tribunal said yes, the society is the promoter, and you have to adhere to the all that sections and subsections of the RERA. Now coming back on our subject, three judgments which were very important. One was the Vedai Akash, second was Goregaon Pearl, second and third was Sangeeta. Now these are the clear picture of the society being the promoter. There are hundreds of questions like, the society don't want to become a promoter. So I tell you what is the process when a developer takes a development agreement from you as a society. They go to the RERA, and the RERA is insisting that since the conveyance is with the society, you are have a development agreement, then the society must be a co-promoter, and they are insisting that the society file all those requisite forms. Form number B, that is an affidavit to the honorable authority saying that we are the owners and we will adhere to as a co-promoter. Now there is no doubt about it that the society is a co-promoter even if they actually terminate the promoter. Many society, what they are doing is that they are also appointing some development managers instead of executing the development agreement, because it is still under the arbitration process. So that development manager cannot sell it, because on their head, on their signature, because either you have to take the you can say power of attorney from the society, and in that process also the society becomes the promoter. So ultimately there is no go. You have to, as a society, think twice before you terminate. You negotiate, or sometime it may be, if it is possible then and it is necessary, you terminate it, then appoint some other. Or if it is the self redevelopment you are doing it, then the buyer, you have to take it in the confidence, and whatever balance amount which the buyer needs to pay, they will cooperate with you, they will give it to you, because you are now promoter and they want their house. They are your next door now future neighbors. So today maybe you are fighting in the court, sometime you will be enjoying your festivals and other things together. So why don't you think from the other perspective, that the law is now very absolutely clear that whenever there is a promotership question is there, please read these three judgments very carefully, and this is what the act says. आपको ये आपका आज का एपिसोड कैसा लगा? यदि आपके पास और कुछ प्रश्न हैं, ज़रूर चैट बॉक्स में डालिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए,
मैं संजय चतुर्वेदी आपको फिर से एक नए सब्जेक्ट शायद डीम कन्वेंस पे या कुछ और ऐसी चीज़ों पे लेके आऊँगा, या जैसे डेवलपमेंट एग्रीमेंट में क्या होना चाहिए या क्या रिक्विजिट्स है डेवलपमेंट एग्रीमेंट में, या आप डेवलपमेंट एग्रीमेंट कैसे टर्मिनेट कर सकते हैं, उसके क्या लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, कुछ और सोसाइटी से रिलेटेड लैंडमार्क जजमेंट्स अगले आने वाले एपिसोड्स में लेके आऊँगा। कुछ बहुत इम्पोर्टेंट इंटरव्यूज़ आने वाले हैं अगले एपिसोड्स में, जिसमें कि हम जो लर्नेड फैकल्टीज़ हैं, लर्नेड एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, उनको इंटरव्यू कर रहे हैं। और अगले आने वाले एपिसोड्स में you will be listening from the horse's mouth that what is the law as far as the related to the society. If you have any questions on the society, if you have any specific issue with the society and you want us to take it in the next episode of this podcast, I will be glad to read all your comments and answer and take an answer from the expert and give it to you from this particular platform. Till then, thank you very much. I am Sanjay Chaturvedi, your host for the Society Mitr. I'll see you again next Sunday, 11 o'clock. Thank you very much.